Assalamualaikum and welcome to this very special podcast by Express Tribune. हम अक्टूबर के महीने में बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस के हवाले से, जिसमें ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें एक दूसरे की कोई कहानी सुनना है, इंस्पायर होना है, मोटिवेट होना है. आजकल हम देखते हैं कि ये अब एक टैबू नहीं रहा. People have started talking about it. People have started encouraging everyone कि early screening कराएं, treatment अब possible है, cancer curable है, आपकी जो है वो पूरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है अगर आप अपनी screening कराएं और जो active decision आपने लेना है डॉक्टर के पास जाने का वो सबसे पहले लें. आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, I would like to say she is a very special one because अमूमन जब आप जर्नी किसी की सुन रहे होते हैं, कोई भी अपनी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं, तो अमूमन वो तब शेयर करते हैं जब वो उस तमाम प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं. आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ यंग, शी इज़ होपफुल, शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक. इनका एक फुल फ्लेजेड करियर भी है. हाउ शी गॉट टू नो अबाउट हर ब्रेस्ट कैंसर, ट्रीटमेंट कब शुरू करवाया, किस तरह से करवाया, एंड मुझे इनके बारे में एक बात पता चली जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनको जब इनके ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला, शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड और एक हफ्ता था शायद इनकी शादी में. ये इनसे हम डिटेल्स जानेंगे एंड हाउ शी कोप अप विद इट, किस तरह से उन्होंने इस जर्नी को विदाउट लूजिंग एनी होप जारी रखा है. इनसे जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी. हमारे साथ मौजूद हैं नशमिया आमिर भट्ट. अस्सलाम वालेकुम नशमिया, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर आयशा. आई एम अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग ओके. नशमिया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, ना सिर्फ उस टाइम का जो आप हमें अभी देंगी, बल्कि इस करेज का, इस ऑप्टिमिज्म का जो कि आपको यहाँ तक लेके आया है. मैं आपकी जर्नी पे बिल्कुल आऊँगी, बट आई वांट टू आस्क यू द फोरमोस्ट क्वेश्चन, और वो ये है, व्हाई डिड यू थिंक कि आपकी इस जर्नी को आपको शेयर करना चाहिए, और क्या लोग रिलेट करेंगे, ज़्यादा होपफुल होंगे? व्हाट वाज द रीज़न? आयशा, बिकॉज मैं जब डायग्नोज हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से तो मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था. और जब बताया तो लोग थोड़े शॉक में आ गए थे और कहते थे हाय ज़्यादा लोगों को नहीं बताना. उन्होंने एक ब्रेस्ट कैंसर के साथ कोई एसोसिएट कर ली थी, एक शेम, जैसे मैंने कोई गलती की हो, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है. सो आई थिंक दैट वाज माय मोटिवेशन कि नहीं, आई एम नॉट गोना स्टे क्वाइट. ब्रेस्ट कैंसर होता है जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस, उसका क्योर है और उसकी गलती नहीं है पेशेंट की कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और कोई शेम की बात नहीं है. सो आई थिंक दैट मोटिवेटेड मी टू शेयर माई जर्नी लाइव. लाइक आई स्टार्टेड डिस्कसिंग इट right when my treatment began. And this was ये कब से आपके exactly October 2022 was when my first chemo session took place. So okay. I was diagnosed in August 2022. अच्छा, so हम शुरू से शुरू करते हैं. How did you get to know about this, and is it true कि उस वक्त आप you were just about to get married एक हफ्ते के बाद? Yes, absolutely. So मेरी ढोलकियाँ चल रही थी और मेरी शादी थी on the 6th of September, not in Karachi, not in Pakistan. We were flying out. तो मेरी खाला, मेरी mom's best friend got diagnosed of breast cancer on the night of one of my ढोलकीज़. उनकी बायोप्सी हो रही थी, उनकी रिपोर्ट्स आई, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मैं शादी पे नहीं आ सकती. And Aisha, something went, like, I don't know, I can't explain how I felt at that moment, but I woke up the next day and I was like, अम्मी नहीं, आपके तो मैमोग्राम करा के ही मैं शादी करूँगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी. Like, I forced my mom and the women close to me, I forced my blood relatives कि भाई मैमोग्राम कराएं सब और फिर हम चलते हैं शादी पे, you know. So अम्मी was busy with my wedding preps. तो अम्मी मेरी मान नहीं रही थी, लड़ के हम लोग फाइनली पहुँच गए हॉस्पिटल और उनका मैमोग्राम करा लिया. Surprisingly, the morning that we were going to the hospital, I was taking a shower. I've always self-examined. Okay. उस दिन मुझे कुछ lump feel हुआ. So in my head, I was like, ये कुछ हो नहीं सकता, मगर चलो आज जा ही रहे, check करा लेंगे. And there was no pain? Nothing. Okay. It was painless. It was just a random lump that usually हो जाते हैं, you know, according to our cycles, you feel lumpy. When I went and अम्मी का अल्हम्दुलिल्लाह मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड सारा कुछ क्लियर हुआ, तो मैंने you know the doctor was sitting there and I said, listen, I'm feeling something, आप मेरा क्या कर सकते हैं? Because keeping in mind I was 31 okay. of age, so वो younger under 40 का मैमोग्राम करते नहीं करते, right? बिल्कुल. So at that point the doctor is like, आपको मैमोग्राम तो नहीं कर सकते, आपका अल्ट्रासाउंड कर लेते. And keeping in mind this is a very random, like चलो कर ही लेते हैं, you know, दुल्हन है. So she wants to get, you know, like
examined, चलो कर लेते हैं. When as soon as they put the ultrasound machine where the lump was, I could sense panic in the room, and it was instantly that I was taken for a biopsy, immediate biopsy, and in my head I'm like, biopsy कर क्यों रहे हैं? Like ऐसी randomly तो biopsy होती नहीं है. But were you upset? उस वक्त एक heart sinking feeling होती है. Were you scared? You know, no. I was not scared. I went numb, and I was literally throughout praying to God. I was like, whatever it is, you're going to get me out of it. So I know you have my back. Like Allah Mia, like I did not, you won't believe it, I didn't shed a tear that day either. So I just went with the doctor, and I was cracking jokes with them. I was saying, you know, is this normal? And they were like, nahi, aajkal normal ho gaya hai. And they didn't tell me what it is. But biopsy kar rahe the, to kuch shak to tha. Okay. And because my aunt is a part of that hospital, so she had given my mom an idea on the screen. My mom's also a sonographer, not practicing. So unne jab wo scan dekha, cancerous scans are very obvious. And it was the same day? It was the same day. All of this is happening, and I had a dance practice in like 5 hours. So everybody was coming to my house, or ye subah ho raha tha. So that's how my biopsy took place. And when they did my biopsy in my heart, I knew it's going to be cancerous. Yeah. Okay. For sure. So when you got to know about this, आपने एक दिन तक आपका probably, I think it was your defense mechanism or something, you were, you know, like just taking it lightly. But what was the time that you decided कि मुझे अभी खुशी खुशी अपनी शादी enjoy करनी है और फिर आके इलाज करवाना है? How did that work out for you? My mom jokes around. She thinks I should have been a doctor. Because वही सेम दिन जिस दिन मेरी बायोप्सी हुई तो आपको पिक्चर दे देते हैं अल्ट्रासाउंड की, कुछ बोलते नहीं, दे नॉट अलाउड टू से एनीथिंग टिल इट्स यू नो रिटन, प्रॉपर टेस्टिंग ना हो जाए. तो मैंने वो पिक्चर देखी अपने ट्यूमर की, और फिर मैंने जाके google.com पे सारी जर्नल्स, नॉट लाइक रैंडम गूगल, बट आई वेंट थ्रू मेडिकल जर्नल्स and I saw the kind of tumor I had, and I knew it's cancerous. So in the middle of the night I'm messaging my mom saying, Mama, ये तो breast cancer है. And अम्मी सुबह उठी, अम्मी ने कहा, you know, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं सोचो, देखते हैं क्या होता है. But she knew. She knew. So like I mentioned, my aunt was part of that hospital, तो उन्होंने एक favor करके मेरा biopsy का result जल्दी मंगवा लिया था, within a day. Usually biopsy takes 10 days to come. I didn't have 10 days. My wedding was in 10 days. So that means I was flying out in 1 week for my shadi. So when I got my biopsy result on the day of my myo, and we held it, and I remember, I think biopsy result अम्मी को पता चल गया था, आंट ने कहा था मायो गुजर जाए तो रात को पिक करना, you know, धूमधाम से अभी सेलिब्रेट करो अपना इवेंट. और मायो वाले दिन मैं अम्मी के पीछे भाग रही थी. मैंने कहा मम्मा उठाना है बायोप्सी रिजल्ट. अम्मी ने कहा भी रिलैक्स, अभी थोड़ा एंजॉय करो अपना, जो करना है आराम से उठा लेंगे, आ गया रिजल्ट. तो वी वॉकड इन, बायोप्सी रिजल्ट उठाया हमने, अम्मी ने पढ़ा था, आई रिमेंबर, एंड दैट इज़ व्हेन आई थिंक योर हेड स्टार्ट्स शेकिंग, एंड अम्मी जस्ट वाज स्टेयरिंग एट मी, एंड देन आई सेड अम्मी बस अभी जस्ट रैप इट अप, अभी घर चलते हैं. वी सैट इन द कार विद अब्बू. अब्बू ने पूछा हाँ सब ठीक है? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, हम समोसे खाते हुए घर गए हैं. लाइक आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट. You didn't tell your father? No. Okay. At that point I wanted time by myself, to understand what's happened. So I went into my room, biopsy result लेके कमरे में गई. I read it like 10 times कि है क्या. पहली बार लिखा होता invasive ductal carcinoma. So I tried looking up what it means, did some research for a few hours, and I knocked my dad's door. I never knock. With our house, it's very, you know, casual, we chill, you know, बात कर लेते. तो मैंने knock करके मैंने कहा I need to talk to you, and that's when my dad opened the door. Ammi was standing with me, and he just looked at me and he burst out in tears. And I said वो biopsy के result की बात है. And he read the result, and all I remember is lots of tears from my parents. And again that time I wasn't crying because they were crying, and I was trying to understand कि हुआ क्या है. Okay. And वो रात थी, that was the longest night of our lives, I feel. We sat like we sat for a good 7-8 hours. This is starting from like 9 p.m. up until 5 in the morning.
My brothers don't live here, so we called them. मैं बार बार कहती और किसी को मैंने अभी नहीं बताना, अभी सिर्फ हम लोग, like मुझे सिर्फ अपने लोग. भाई obviously वो भी रोना धोना, they were like हम लोग अभी आ रहे हैं पाकिस्तान and शादी को भूल जाओ, अभी नशमिया प्रायोरिटी है and this and that. That the only time I cried was when I was told कि you know chemotherapy sometimes leads to infertility. Okay. So for me, I was like, oh my God, I'm getting married and will I never have kids? Again, I want to emphasize sometimes. Alhamdulillah, it didn't for my case, but some people don't get their fertility and back. also since you didn't have any pain, तो आपका stage 1 अब तो कोई stage 0 something भी आ गई, so early stage में you got diagnosed, that's why you had probably some options, right? Yes, I was stage 2. Okay. So yeah, mine wasn't very early on, but alhamdulillah at a stage where treatment की इतनी options हैं कि you power through it. Okay. इसलिए I emphasize on early detection. Aisha, had I not gone and taken my mom for a mammogram, Absolutely. I would have never found my tumor. Absolutely. Self-examining also. Absolutely. अच्छा, so Nashmiya, अब if it was any other human being, I don't know, ये courage जो आपकी है, you have this gift with you, would not want to continue with that, you know, wedding और ये सारी चीज़ें, और कोई भी इंसान हो तो वो सोचे या तो वो give up कर दे या वो फौरन इलाज की तरफ भागे. How were those 7 to 10 days for you when you decided कि इलाज क्या बाद में आपने करवाया and then you went on? So basically, Aisha, the next day we started more screening. Screening होती है आपके ट्यूमर पे, अभी और टेस्टिंग होती है कि पता चले किस टाइप का कैंसर है. ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारी किस्में हैं. So मेरा ट्रिपल पॉजिटिव था, स्टेज 2 था, बट ट्रिपल पॉजिटिव जो है दैट मीन्स ER, PR एंड HER2 पॉजिटिव, उसकी डिटेल्स वो फर्दर टेस्टिंग में जाती हैं और पता चलती हैं, वो आपको फर्स्ट बायोप्सी में नहीं पता चलती. सो फर्स्ट डे तो ऐसे गुजर गया. सेकेंड डे फिर हम लोग बैठे, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, उन्होंने कहा अच्छा शादी है, ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, सब पैनिक में थे. ऑब्वियसली पता करना था कि हम फ्लाई कर रहे हैं या अभी ट्रीटमेंट कल शुरू होनी है, राइट. Alhamdulillah, I'm blessed. I had really great doctors and they had seen me and they said, no, listen, तुम्हारी कल ट्रीटमेंट नहीं होगी because अभी टेस्टिंग में ही 10-15 दिन लग जाएंगे. So you go, have a great time if you want to. If you want to sit here and get your testing done, you do that. And in my head, I knew that chemotherapy is the very tough battle, and I was told कि chemotherapy आपको लगेगी. You will have to go through chemotherapy, you will have to go through surgery, you will have to go through radiation. Age also plays a very important role in breast cancer. The younger you are, they say it's more aggressive. So the younger you are, the more fatal, not fatal, I don't want to use that word, but more aggressive it is. It's more fast growing. So when they said I have time, that 10-15 days will not make a difference, I went off. I wanted my hurrah. I said, listen, the next few months will be difficult, even for me, for my family. I wanted to have a good time with my close family and friends. So yeah, we didn't tell the news to anybody aside from like a handful of best friends and family members. Nobody at the wedding knew that I have cancer. They found out a month after the wedding. Okay, so आपके close family circle में throughout this time for like 7 to 10 days, did you have, you know, these thoughts coming back कि अभी जाके ये करवाना है? Was it like complete जिसको कहते हैं बिल्कुल shut down अपने system को कर देना from the truth? Was it like that? So Aisha, I had spent a year and a half planning my wedding. So you know how our weddings are, रातों को like dance practices तो ढोलकियाँ. So I didn't let go of any of that. But my day used to start at 7 in the morning at the hospitals. I would come home from my scannings. I got all my scans done before I flew out. My bone scan, my MRI, my CT scan. There were God knows so many other scans too. Got all of those done in 7 days, alongside all the dance practices. Rashmiya, how did you do that? And जब आप जाते थे सुबह hospital, was there somebody to go with you? Oh Aisha, Alhamdulillah. The doctors used to make fun of me. My entire family clan used to be coming with me to the hospital. कौन जा रहा होता था? वो सबको डांट पड़ती थी कि भाई रुक जा. अब्बू, अम्मी, my husband had flown in, him, fiance at the time, my brothers, they had all flown in just for like basic testing, which is not treatment अभी शुरू होना, अभी just staging हो रही है, आपकी staging होती है tumor की and all of that. So all the morning, our days would start at 7 in the morning, test, and you know how tests are, it's a 5-6 hour process.
उसके बाद even एक normal day पे भी when you come home you don't want to do anything. अच्छा नश्मी मुझे ये बताएं कि जब आप इस invasive treatment से गुजरते हैं everybody is scared of chemotherapy, right? मगर chemotherapy की जो थोड़ी सी minute details हैं आप मुझसे शेयर कर रही थी I want you to share those things with the audience कि exactly क्या क्या होता है which is like a surprise for you. In chemotherapy. So when I was trying to, I'm a researcher. I like to know what's happening, everything generally in life. तो जब ये illness आई मेरे रास्ते, I started asking people. I reached out communities थी, cancer communities, global. So उनमें message करती थी मगर किसी ने मुझे mentally prepare नहीं किया था कि chemotherapy क्या होती है. सब कहते हैं बाल गिर जाएंगे. That's a tiny bit of it, and I don't think I was even bothered by the hair loss because everything else that was happening with my body. The constant nausea is underrated because the nausea in chemotherapy is even a scent of a flower will make you throw up for hours. And throwing up for hours means you'll be rushed to the hospital because you're dehydrated and just sips of water or any electrolyte is not going to stabilize you. So I spent like 6 months on and off at the ER. बल्कि मेरे वो फ्रेंड्स बन गए हैं क्योंकि they had seen me so much. And along with chemotherapy, women go through menopause, which I was not told. I was told हाँ ovaries shut off हो जाती हैं, but you don't think what that it's means. menopause. और इस एज में expect करना is also you know वैसे ही जब आपको naturally menopause हो रहा होता है it comes with a baggage. So with that it's challenging. Hot flashes is just a part of the menopause, but it's your body is changing. You are just miserable internally. Like I remember there was a point during chemotherapy and alhamdulillah I'm blessed my parents were there to support me throughout and you know they'd see me throwing up and बहुत miserable, but वो remind करते थे हर उल्टी का मतलब ये है कि कैंसर जा रहा है. So that was their positive way of saying ये कैंसर जा रहा है. हर उलझन जो तुम्हें फील हो रही है उसमें कैंसर जा रहा है. So just be positive. जितना मिजरेबल तुम फील कर रही हो उसका मतलब है chemotherapy is working. So I think that helped me power through chemotherapy. Is it true how they speak about your willpower? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हिम्मत हार देते हैं और अगर आप पेशेंट हाँ ना करे तो डॉक्टर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ट्रीटमेंट में, राइट? सो आपको क्या लगता है कि विल पावर, आई नो बोलना बहुत आसान है किसी ऐसे इंसान के लिए जिससे ना गुजरा हो, बट सिंस यू हैव बिन थ्रू इट, यू आर इन अंडर एन एक्टिव ट्रीटमेंट इवन नाउ, सो इज देयर अ टाइम व्हेन यू हैव टू गेट इट बैक? Is there a time जब आप vulnerable हो जाएं आप बोलें? Absolutely. I just told you that जब मैं diagnosed हुई थी, I was very strong. Alhamdulillah, I didn't question God even once. I think that faith in Allah Mia was हो गया ये, He'll make it. You know, He has a plan. But that also kept me mentally strong, and I think the war is all in the mind. Your body is suffering, yes, but आपकी willpower is so important. मैं लोगों से बात करती हूँ, I make sure मैं बहुत सर्वाइवर्स से बात करूँ जो अंडर ट्रीटमेंट है उनसे बात करूँ और वो crumble होते हैं. It's of course I also crumbled. Like I mentioned, I remember one night and I feel so bad. I was crying and telling my mom मैं जाऊँगी नहीं कीमोथेरेपी पे. I'm done. Like I'd rather die than go through that turmoil that I. And this was after how many chemotherapies? This was after 3 chemotherapies and I had 3 more to go. I used to have after every 3 weeks and I had lost all my strength by my 3rd chemotherapy and I begged her. I was like, just stop it, let me die, what's your problem? So this came, ये वाली stage आई. And people think I was strong throughout. No, I broke down. Like you're a human being. Yes, you break down, but you sorry. Along with willpower, I think having a strong support system is important. Yes. I was very blessed. I have a group of fantastic bachpan ke dost, of a bunch who helped me and more so my family. Like they were just there, kuch bhi ho, and I was in isolation for 6 months during chemotherapy, but they were there in their own ways, dropping food, dropping flowers, checking in, duaein, like everything. So I think the support system got me through. Like I said, I wanted to give up on my treatment halfway.
Absolutely, absolutely. अच्छा, एक और चीज़ जिसमें आप blessed रही हैं, you shared your journey with me. There's this one thing that we think of जब हम breast cancer की बात करते हैं is the fear of losing your breast, and it is such a strong fear because इससे आपकी self esteem, आपकी sexuality, बहुत सारी चीज़ें related होती हैं, right? So you were lucky enough, but did you have this thing in your mind, this thought in your mind once कि अगर ऐसा हुआ, you know, how did you cope up with that? Aisha, like I'm going to go back to, I think it was some strange willpower or strength that I had at that time. My surgeon, God bless her, she's amazing. उन्होंने मुझे प्रेप किया था, लिसन अभी पता चलेगा, लाइक बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वी माइट हैव टू डू मिस्टेक्टमी, वी माइट नॉट, वील सी, अभी तुम कीमोथेरेपी तो कराओ. So when she had said that to me, I started researching and I had mentally prepared myself for a mastectomy. But alhamdulillah, I didn't need it. Not everybody who has breast cancer needs a mastectomy. Maybe a quarter of my breast was removed and rebuilt. Okay. And but then I was lucky because I detected it so early. Yes. You know, so absolutely. Early detection is so important. Absolutely. और हम इस बारे में अमूमन बात भी करते हैं कि जब हम स्क्रीनिंग करवाते हैं तो द फियर कि हम जाएंगे और पता चल जाएगा तो इलाज शुरू हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स रिमूवल ऑफ अ ब्रेस्ट और यू नो इतना ज़्यादा पेन. ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो बढ़ जाएं. ऐसा भी हो सकता है कि कोई और चीज़ निकले एंड इट्स बिनाइन. ये भी हो सकता है, राइट? आप मुझसे शेयर करी थी एक क्यूट सा एक इंसिडेंस जो कि आपके साथ हुआ था इन दिस पेशेंट. So I would like you to tell about I met that. this wonderful lady. I think she was in shock when she met me because मेरी तब ट्रीटमेंट के लिए मैं तैयार हो रही थी. कीमोथेरेपी थी मेरी in a matter of days. एंड उनकी बायोप्सी पहली हो रही थी. तो वो मुझे बार बार देख रही थी एंड वो शी वॉज मुझसे एल्डर अराउंड इन हर 70s. तो शी इज़ लाइक, बेटा तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा क्यों? शी इज़ लाइक, क्योंकि कैंसर है तुम्हें? मैंने कहा नहीं, अल्लाह मियाँ है, हिम्मत है. अम्मी अब लाइक वी वर, शी सॉ मी एंड माई पेरेंट्स लाफिंग अबाउट समथिंग, वी वर क्रैकिंग जोक्स एट दैट पॉइंट. तो शी वाज लाइक, बट मैंने तो अपनी गुठली चेक ही नहीं कराई ना. मैंने कहा आंटी आपको कब निकली थी? She said like 4-5 years ago. She first felt a lump, but she didn't bother to go to a doctor at that point because she was scared कि कुछ निकलेगा. And a lot of people do that. That's the thing. But then because of that, she had to lose her breast. She's become a friend and we talk all the time. But my point is, early detection होगी तो वो इतना extreme आपको invasive surgery होनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. And also adding on, Aisha, not everybody needs to go through chemotherapy. There's so many breast cancers, so many different types, age groups matter, everything. There's so many other factors. I know people who never had to go through chemotherapy. They just took medication and they're okay and they're healthy and they have a family, beautiful life. सो वही है, आप डिटेक्ट पहले करेंगे तो आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतनी ज़्यादा होंगी एंड लेस इन्वेसिव होंगी. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अच्छा, इस वक्त जो मैं रश्मिया मेरे सामने देख रही हूँ, शी इज़ यू नो चीयरफुल, शी इज़ होपफुल, शी इज़ स्माइलिंग, बट एज यू ऑल्सो मेंशन कि देयर वर फेजेस, राइट? सो जो हम ब्रेवरी कहते हैं, जो हम करेज कहते हैं, वो एक, दिस इज़ नॉट अ लीनियर यू नो जर्नी और अ लाइन. सो व्हाट वुड यू लाइक to tell everybody जो या तो इससे गुजर रहा है या गुजरने वाला है या जिसका कोई जानने वाला गुजरने वाला है, that what kept you hopeful and what should keep them hopeful? I believed in the treatment that I was getting. मैंने बहुत knowledge gain की. My family makes fun of me. I think I've done PhD in the kind of cancer I had. But I think knowledge is key. आप research करें and do not lose willpower. There's a cure for everything out there अगर आप वो faith रखें. And I also feel reach out to your support system. Yes. Like Aisha, I take cancer as a blessing in disguise. I'm glad I had cancer when I did get it because I saw the kind of support I have in my life. Alhamdulillah, like I don't take it as a hi मुझे क्यों हुआ. I needed, maybe God wanted me to see how lucky I am and I saw it. To have that support system, because दोस्त बहुत होते हैं, family members बहुत होते हैं, but ऐसी किसी चीज़ में पता चलता है कि कितने लोग आपके लिए actually worried हैं. Yeah,
Agreed. Absolutely. We Yes. would like to take this as a message from you. Thank you so much, Nashmiya. And inshallah, I want to talk to you about your journey year by year, har saal, inshallah. So, wish you all the strength, all the health in the world. Thank you so much for having me, Most Aisha. welcome. And एक बड़ी अच्छी बात मुझे किसी ने कही जो कि आईसीयू में काम करती हैं एज अ डॉक्टर, एंड शी टोल्ड मी कि एक पेशेंट को उन्होंने देखा और उन पेशेंट का जब उन्होंने उन पेशेंट की पेशेंस देखी तो शी वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये इंसान, इनको इतनी फ़िक्र क्यों नहीं है, ये इतनी ज़्यादा परेशान क्यों नहीं है. तो उन्होंने पूछा कि आंटी आप इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे हैं, आप इतनी जो है वो होपफुल कैसे हैं. तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने ये बात बहुत जल्दी समझ ली है कि ज़िंदगी में दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक वो जो आपके कंट्रोल में है और एक वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एग्जामिनेशन आपके कंट्रोल में है, डॉक्टर के पास जाने का डिसीजन आपके कंट्रोल में है, अपने आप को दिलासा देना, उम्मीद देना, अपना सपोर्ट सिस्टम जैसे कि नशमिया ने भी कहा उसके अराउंड रहना आपके कंट्रोल में है. जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ना सोचें. सो दैट इज़ जर्नी, अल्लाह ना करे अगर किसी को भी होती है, is as smooth as possible for you, and be this source of inspiration, this source of example for everybody that cancer is curable and you are going to make it happen. This is all from Express Tribune podcast. I hope हमारी ये podcast किसी को motivation दे, किसी को हिम्मत दे. Take very good care of yourselves and your loved ones. Allah Hafiz.